Okay, so let's start. Hello and welcome everyone to the newspaper analysis at Plutus IAS Academy, where we see important ideas and concepts which come in Hindu and the Indian Express and which can help you in your UPSC mains preparation. So I know it's very hot in Delhi. People who are coming in the offline classes, kudos to them. They are doing a great job. And I want to begin today's discussion by uh, providing you a concept, providing you a thing which can help you to make your preparation robust. The image which you can see on the screen is an excerpt from the book Lost Spring by Anis Jung. And this book, excerpt is there in your class 12th NCRT book. जिन्होंने भी CBSE से पढ़ाई की है उनको पता होगा कि this chapter was there in your NCRT book of class 12th. And in this chapter, there are really beautiful things which can be learned and how it can help you in your UPSC preparation. It can help you to strengthen the way you're going to propagate your message, propagate your ideas through words, right? Because the writing style which Anis Jung uses, it is very good and kind of sensitizes readers towards the issue which she wants to highlight. Right? That's why I want to tell you about the importance of literature, how reading literature can help you to strengthen your UPSC preparation, because we know that we can just tell a certain concept to a reader, to a person, but if we tell a story, if we tell a thing using the literary language, it really sensitizes the reader. कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है रीडर के लिए, और वो ज़्यादा अच्छे से हम अपनी बात समझा सकते हैं. इसीलिए मैं आपको लॉस्ट स्प्रिंग लेसन से कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस दिखाऊंगा और किस तरीके से रीडर्स ने अपनी 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 जो message है उसको बताया. At the same time, you're also going to learn from this thing that how you can read novels, you can read fiction to increase your effectiveness of your message, of how you're going to propagate your message in your essay or in your ethics paper. Because आपको पता होगा कि GS के पेपर में तो लैंग्वेज का उतना नहीं मैटर करता है, बट एथिक्स के पेपर में, essay के पेपर में, एंड इन योर ऑप्शनल कहीं ना कहीं लैंग्वेज कहीं ना मैटर करता है, राइट? सो लेट्स सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स which is there in the chapter Lost Spring. You must have seen this thing when you were in school, right? और आप बोलोगे सर आप तो हमें स्कूल वाला चीज पढ़ा रहे हैं, but there were a lot of good things which we have often ignored, right? ऐसा काफ़ी मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं that they haven't focused much on the English subject, because उसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, and they just studied for few days and they scored good marks, but they ignored the beauty of this subject, the literature which was there in our NCRT books, right? So this is the chapter which is there. In this chapter, writer is sharing her experience about the her encounter with a child who is living in a slum. एंड वहाँ पे वो गार्बेज को कलेक्ट करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल. कहीं ना कहीं बहुत सारे मीनिंगफुल इंसाइट्स हैं यहाँ पे जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ. व्हेन शी मीट्स विद चाइल्ड, सो जो उस बच्चे से मिलती है उसका नाम होता है साहिब आलम. सो शी सेज हर दैट व्हाई डू यू डू दिस, व्हाई डू यू स्काउंजिंग फॉर गार्बेज एवरी मॉर्निंग. तो वो उससे कहती है कि तुम स्कूल नहीं जा सकते क्या? बोलते कि अगर कोई होता हमारे वहाँ तो डेफिनेटली मैं जाता. तो शी सेज कि अगर मैं एक स्कूल बनाती हूँ तो क्या आप उस स्कूल में आना चाहोगे? बट जब कुछ दिनों बाद वो बच्चा राइटर के पास जाता है, पूछता है दैट इज योर स्कूल रेडी? सो राइटर फील्स वेरी एम्बैरेस्ड एंड शी रोट दिस थिंग दैट इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल. I say embarrassed at having made a promise that was not meant, but promises like mine abound in every corner of his bleak world. यहाँ पे राइटर बता रहे हैं दैट इस तरीके के प्रोमिस बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स करते हैं और द पीपल हु आर लिविंग इन स्लम्स, राइट? और जो कि दे डोंट मीन इट. कहीं ना कहीं वो सिर्फ इलेक्शंस के समय पे इस तरीके की बातें करते हैं, बट actually they don't want to change their lives, right? And that's what writer is writing through her experience. At the same time, एक बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है यहाँ पे जिसमें व्हेन शी आस्क्स समवन दैट व्हाई डोंट यू वेयर चप्पल्स, व्हाई डोंट यू वेयर शूज. सो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि इट्स वेरी हैंडी और कहीं ना कहीं मतलब बहुत कंफर्टेबल रहता है विदाउट शूज. बट राइटर इज राइटिंग हियर दैट इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन. मतलब उन कल्चर्स में ये ट्रेडिशन है दैट दे शुड स्टे बेयरफुट, राइट? और वो बोल रही है आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ
poverty. It's a kind of excuse used by those people, those communities to uh, avoid the perpetual state of poverty. जो जिस लेवल की पॉवर्टी में वो रहते हैं उसको कहीं ना कहीं एक तरीके का एक्सक्यूज है ये वाला लाइन. ऐसे ही बहुत सारे बहुत अच्छी अच्छी लाइनें यहाँ पे यूज किया है. सो व्हेन शी विजिट सीमापुरी व्हिच वाज देयर इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली टू विजिट व्हाट काइंड ऑफ लाइव्स दे लिव. सो वहाँ पे राइटर ने कितनी अच्छी बात बोली है दैट माय acquaintance with barefoot backpackers lead me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it. Though it is there in the periphery of Delhi, Delhi is an urban center. It's a cosmopolitan city, right, where there is a lot of development as compared to other parts of India. But still, the जो peripheral area में जो cities हैं, such as Simapuri, was miles away from it. Right. So that's why I was emphasizing on this, that the use of language, you can definitely, increase the strength of your communication. You can increase your sensitization through your message, right? And that's why it's important to read novels, good fictions. So good writer Anis Jung is one of the writers which I really like, which you can definitely follow. Read her books. इनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, जैसे कि लॉ स्प्रिंग एक किताब है जिसमें उन्होंने बहुत सारे अलग अलग जगह के स्लम्स के बारे में बताया है. एट द सेम टाइम देयर इज अनदर बुक which named Unveiling India, talks about the situation of women in India. किस तरीके के patriarchal norms हमारी country में थे during 1980s and 90s, right? Which are still there in some part of our country. So you can definitely read these books, right? Apart from that, you can also see this line: "Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more." So by reading these kind of articles, these kind of books, definitely you can acquire this language, and then when you are going to write, कहीं ना कहीं आपको जो thought process है वो भी इस तरीके से work करेगा, right? Writers की बहुत अच्छी खासियत होती है that they have a very beautiful understanding of society. जिस तरीके से वो समाज को observe करते हैं, it's really commendable, right? और कहीं ना कहीं उस तरीके से हमें भी सोचना चाहिए. दो इट टेक्स टाइम इट टेक्स लॉट ऑफ रीडिंग थ्रू आउट अ लाइफ कहीं ना कहीं, बट यू विल इफ यू गोइंग टू स्टार्ट दिस थिंग, डेफिनेटली इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर essay and your ethics paper. So I hope this message which I want to give you is being propagated to you, and this can help you in your ethics and essay paper. And with that, let's move forward and see the first of all, we are going to see the topics which we are going to discuss today. And in today's newspaper, there are a lot of good articles especially from the sections of geography and science and technology. We are going to talk about Indian monsoon. Recently, there is a report by IMD which talked about that this year we are going to witness higher monsoon, right, which is going to be a good thing for our country. At the same time, recently we have seen a tropical cyclone in the state of Bengal. हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. At the same time, हम एक important concept के बारे में बात करेंगे, substantive equality, जिसकी वजह से ही things like affirmative actions और positive discrimination emerge करते हैं. इस concept के बारे में बात करेंगे. And a mission launched by NASA recently, PREFERIE mission, जो कि बहुत important है in studying the energy budget of Earth. तो ये सब concept हम देखने वाले हैं आज के newspaper discussion में. So let's start with the first article. So the news which you can see on the screen is talking about that IMD has released a report in which it has mentioned that India is going to witness above normal monsoon, right? So this is a news which is going to be a good thing for our economy. हमें पता है that monsoon is important for Indian economy. It's important for our agriculture system. At the same time, हमारी कंट्री में जो इन्फ्लेशन है वो भी कहीं ना कहीं मानसून पे डिपेंड करती है. अगर हमारी कंट्री में रेनफॉल कम होता है तो वी सी अ हायर इन्फ्लेशन, राइट? हम देखने वाले हैं इस कंसेप्ट को, how monsoon occurs in India, what are the important things from your prelims perspective, and also it can be asked in your mains examination. So let's begin. So in simple words, what is monsoon? Monsoon is basically the reversal of winds or the seasonal winds which comes in the Indian subcontinent, right? So आप ये जो figure देख पा रहे हैं इसमें आप देख रहे हो there are certain winds which are emerging in the Indian Ocean, and it is coming towards the Indian subcontinent, and hence it is bringing with it moisture, and it is that is leading to rainfall in the Indian subcontinent, and that's why this makes Indian subcontinent very important. But basically monsoon is an important part for Indian subcontinent, because इसी की वजह से जो हमारा agriculture है वो dependent है. As per a study, almost 60% of Indian agriculture is dependent on rainfall, right? So कहीं ना कहीं हमारे farmers के लिए बहुत important हो जाता है. जैसे कि हमने बहुत सारी वीडियोस में बात करें कि इंडिया में almost 50 से लेकर 55% तक जो लोग हैं they are dependent on agriculture, and for them monsoon is important.
So now let's see what are the factors which influence monsoon. क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से monsoon affect होता है. So there is a concept which is intertropical convergence zone, ITCZ, right? इसको समझने के लिए you have to see this picture. So आपको पता होगा that our Earth, let's consider this as our Earth, is revolving around the sun, right? पर अर्थ की एक बात है कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड विद अ टिल्टेड एक्सिस, राइट? सो जो इक्वेटर है कुछ इस तरीके से होगा. दिस इज वेयर द इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई या इस समय पर जो अर्थ की रेस पड़ रही होती है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, और जहां पे रेस पड़ती है वहां पे हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बन जाता है. अब ये होता क्या है? बेसिकली दिस इज द जोन वेयर देयर इज लो प्रेशर, ठीक है? यहाँ से क्या होता है कि जो लो प्रेशर डेवलप होता है और वहां से जब हॉट रीजन होगा वहां से जो गैसेस हैं वो इवेपोरेट होंगी और ऊपर की तरफ राइज करती हैं, देन दे मूव टुवर्ड्स दी नॉर्थन एंड द साउथर्न पार्ट, राइट? और इसीलिए इस रीजन को इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोला जाता है, जहाँ पे जो विंड्स है वो जो आके कन्वर्ज करती है, राइट? दिस इज द थिंग. कहीं ना कहीं मॉनसून का जो दूसरा फैक्टर है, इट इज द प्रेशर डिफरेंस विच इमर्जेस. प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है आपको पता होगा. ड्यूरिंग समर्स क्या होता है कि जो कॉन्टिनेंट है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होते हैं, राइट? और वो ठंडे भी थोड़ा लेट होते हैं, बट ओशियंस थोड़ा ज़्यादा टाइम होते हैं. वी हैव स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट इन वन ऑफ आवर वीडियोस, राइट? सो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ऑन द लैंड एंड द ओशन. सो बेसिकली जो लैंड है एंड स्पेशली दिस लद्दाख रीजन, जो लद्दाख प्लेट्यू है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से एक लो प्रेशर क्रिएट होता है, एंड इन द ओशन देयर इज हाई प्रेशर. इसीलिए यहाँ से जो विंड्स हैं इस तरह प्रोपोगेट करती है, एज यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर. एंड व्हेन दे कम हियर दे कलेक्ट द मॉइस्चर फ्रॉम दिस ओशन, द इंडियन ओशन और द अरेबियन ओशन, और यहाँ से it brings moisture on the Indian subcontinent, और जिसकी वजह से रेनफॉल होता है. So pressure difference is another factor for it. At the same time, there is another jet stream which is there, जो कि flow करती है सोमालिया region में, right? Which enhances the intensity of the monsoon, right? So this is also an important factor. अपार्ट फ्रॉम दैट टिबेटल प्लेट्यू के बारे में हमने बात किया कि बिकॉज दिस रीजन इज फ्लैट एंड ऑल्सो इट बिकम्स हॉटर, जिसकी वजह से एक लो प्रेशर क्रिएट होता है, और इसीलिए जो विंड्स हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करती हैं, विच ब्रिंग्स रेनफॉल टू आवर कंट्री, राइट? इसलिए आप देखेंगे जो भी हमारी कंट्री में अलग अलग रीजन्स में मॉनसून के अलग अलग नाम है, राइट? और उससे रिलेटेड फेस्टिवल्स है, उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी हमें देखने को मिलता है, और ये अलग समय पर आता है. फर्स्ट इट कम्स इन द स्टेट ऑफ केरला, देन इट कम्स इन द नॉर्थर्न रीजन एंड इट आल्सो रीचेस टू द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, राइट? So this is the thing. I hope आपको ये चीज समझ में आया होगा. This is the intertropical convergence zone, and this image shows the winds how they emerge. जैसे कि हमने बात किया कि जब इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है वहाँ पे विंड इमर्ज करती है, देन दे मूव टुवर्ड्स द नॉर्थन डायरेक्शन, एंड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इट मूव्स टुवर्ड्स द साउथर्न डायरेक्शन, और वहाँ पे जाके व्हेन दे कूल्स डाउन देन वो सबमर्ज करती है नीचे की तरफ, और दोबारा से ये साइकिल कंटिन्यू हो जाता है, राइट? सो सेम थिंग हैपेंस इन द पोलर रीजन्स एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन्स. दिस इज द विंड डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच हैपेंस, राइट? All right. Now there is another part of the monsoon. Basically जो हमने अभी देखा था it was the summer monsoon, but monsoon का बोलते हैं there is seasonal reversal of winds which happens. So monsoon में in the winters the reversal of winds happen. मतलब जो winds यहाँ से गई हैं उसके बाद because of the difference in the pressure, basically जो ये Indian Ocean यहाँ पे high pressure create होता है, low pressure create होता है, and in the Tibetan plateau यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, बिकॉज विंटर्स में हमें ज़्यादा कूलिंग देखने को मिलता है यहाँ पे, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ रिवर्सल ऑफ विंड्स व्हिच हैपन. और ये रिवर्सल ऑफ विंड क्या करती है, बारिश लेके आती है अक्टूबर के समय पर इस जगह पे, और ये यहाँ पे मॉइस्चर का सोर्स क्या है, बेसिकली यहाँ से एक जेट स्ट्रीम हमें देखने को मिलती है जो कि कैस्पियन सी से मॉइस्चर कलेक्ट करके लाती है, और इसी रिट्रीटिंग मॉनसून में वी आल्सो सी द रेनफॉल इन द कोरोमंडल कोस्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के कुछ साउथर्न रीजन्स में, राइट? जो कि मॉइस्चर कलेक्ट होता है यहाँ से, बट इस सीजन में आपको ज्यादा बारिश नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ से कोई मॉइस्चर ही कलेक्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज बारिश होने के लिए मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है, राइट? सो दो विंड फ्लो फ्रॉम हियर टुवर्ड्स द साउथर्न डायरेक्शन, बट देयर इज नो रेनफॉल इन दिस रीजन, राइट?
आई होप आपको ये चीज भी समझ में आया होगा. सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ मॉनसून. एंड नाउ लेट्स सी द importance of Indian monsoon. Why monsoon is important? As I mentioned that it's important for agriculture sector. We have already discussed it, and that's why it is important for our economy, because agriculture sector is an important part of our economy. It provides employment to large section of our society. और अगर कहीं ना कहीं इसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है, तो हमें बहुत सारे लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी डिक्लाइन देखने को मिलता है. इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू फार्मर सुसाइड. जिस साल हम देखते हैं कि मानसून सही नहीं होता, उस साल हमें फार्मर सुसाइड ज्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज द फार्म डिस्ट्रेस, राइट. एट द सेम टाइम देयर इज ऑल्सो इन्फ्लेशन which is there in our economy because of the low monsoon. Apart from that, आपको पता होगा इंडिया में जो नॉर्थर्न रिवर्स such as the गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना, they are the rivers which are fed by the glaciers. But जो पेनिनसुलर रीजन में जो हमारी रिवर्स हैं, such as गोदावरी, महानदी और कावेरी, ये सभी रीजन्स क्या है, ये पेरेनियल रिवर्स नहीं, ये डिपेंडेंट होते हैं रेनफॉल पर. और किस रेनफॉल पे? जो मानसून से हमें मिलता है. सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारी रिवर्स के लिए भी. फॉर आवर वाटर नीड्स, इट फिल्स आवर रिजर्वोयर, आवर रिवर्स. So there is also a water need of water importance of the monsoon. Apart from that, it's also important for environmental and ecological. It sets the ecological balance in the डिफरेंट रीजन्स ऑफ आर इंडिया. आपको जब पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट में जो रेनफॉल होता है, उस वजह से वहाँ की हमें बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंस देखने को मिलता है, राइट. और ऐसे ही और भी बहुत सारे रीजन्स में होता है. दैट्स व्हाई इट हैज एन एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर इज आल्सो सोशल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस. आपको पता होगा कि देयर आर लॉट ऑफ फेस्टिवल्स व्हिच आर रिलेटेड टू द मानसून इन वेरियस पार्ट ऑफ. पंजाब में आपको बैसाखी या लोहड़ी जैसे फेस्टिवल देखने को मिलेंगे, जब हमें monsoon arrive करता है, and when the harvesting happens of the crops, right. So there are certain cultural festivals associated with the monsoon, right. This is the importance of monsoon for our country, and I hope आपको ये article समझ में आया होगा. This was important from the perspective of your geography section, and it can also be asked in your prelims examination. Alright, with that, let's move forward and see the next article which was there. So recently, the cyclone Remal has hit the Bengal state and the regions of Bangladesh, right. It has also led to loss of infrastructure, loss of lives. So I thought, why not to see the concept of cyclone, which is important part of your geography syllabus in your GS paper 2, and also it can be asked in your prelims examination. We are going to see the important points, important things which are related to the cyclones, right. All right, let's begin. So first of all, what is a cyclone? So cyclone in simple words is rapid inward air circulation around a low pressure area. साइक्लोन क्यों डेवलप होता है किसी भी रीजन में, उस चीज को हम देखने वाले हैं. बेसिकली देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ साइक्लोन. फॉर एग्जांपल, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट किसी भी साइक्लोन के डेवलप होने के लिए उस ओशन का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए. अदरवाइज वो साइक्लोन डेवलप नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे लो प्रेशर रीजन बनना ज़रूरी है. लो प्रेशर तभी बनता है जब वहाँ पे वार्म वाटर हो, राइट. वाटर जो है इतना गर्म होने लगे, वहाँ पे इवेपोरेशन हो, और जो हीट है और जो बेसिकली वाटर है वो कन्वर्ट होकर गैसेस में अपवर्ड राइज करे. एंड दैट्स व्हाई टेम्परेचर अबव 27 डिग्री सेल्सियस इज इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम दे शुड ऑल्सो कोरियोलिस फोर्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट. कोरियोलिस फोर्स आपको पता होगा, दिस इज द फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ. जैसे कि इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे, जब अर्थ रोटेट करता है तो इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द सरफेस, the winds which are there on the surface, right. सो कोरियोलिस फोर्स भी कहीं ना कहीं जो साइक्लोन है उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है. इट लीड्स टू द सर्कुलेशन ऑफ द साइक्लोन्स, राइट. एट द सेम टाइम ह्यूमिडिटी होना चाहिए हमारे एटमॉस्फेयर में. अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है ऑलरेडी ऑन द इन द एटमॉस्फेयर, दैट हेल्प्स द साइक्लोन्स टू हैपन. इसलिए आप देखेंगे कि ये जो साइक्लोन है आपको ज़्यादा मई जून के महीनों में देखने मिलेंगे, एंड एट द सेम टाइम इन अक्टूबर, बिकॉज उस समय पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी हमें देखने को मिलता है, राइट. अब देखते हैं कि हाउ दी साइक्लोन्स आर बीइंग फॉर्म्ड. अभी हम देखिए कि फैक्टर्स क्या क्या जरूरी है. तो बेसिकली होता क्या है, let me just change the color of the pen. Yeah, so what happens is, मान लीजिए इस ओशन में एक वार्म टेम्परेचर देखने को मिला और वहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट होता है. सो लो प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो गैसेस हैं, वार्म गैसेस, वो अपवर्ड राइज करती हैं. अपवर्ड राइज करने की वजह से कुछ समय के बाद दे आर गोइंग टू कूल डाउन करती है, एंड दे बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस दे रोटेट, राइट. और कूल डाउन होने के बाद दे कम डाउनवर्ड, राइट. और ये साइकिल बार बार रेप्लिकेट होता है.
ये साइकिल क्या करता है, बार बार रेप्लिकेट होता रहता है और इसी से हम देखते हैं कि साइक्लोन का इमरजेंस हो जाता है, राइट। सो लो प्रेशर एरिया जिसको हम आई भी बोलते हैं, राइट, वो आई में बेसिकली जो गैसेज है वो अपवर्ड राइज करती है और रोटेट करके वापस इनवर्ड आती है, right, and this cycle forms a cyclones which moves from one place to another and it often comes into the coastal region. जब ये coastal region में आते हैं, so with it there is a formation of huge clouds which you can see in this diagram, or it's in clouds की वजह से we also see a huge amount of rainfall in a coastal region और इसकी वजह से हमें destruction भी देखने को मिलता है, right. There's a very interesting thing related to this cyclone, that the air circulates in anti-clockwise direction in the northern hemisphere, obviously because of the Coriolis force, or clockwise direction में rotate करते हैं in the southern hemisphere, right? This is the things. At the same time, yes, we have already discussed this thing. So this is the thing which was there related to this thing. So I hope आपको cyclone समझ में आएगा. What are the things which are necessary for the formation of cyclones and how it is formed, right? Now let's see. एक प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ था जो आपके लिए जानना जरूरी है कि साइक्लोन्स को अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल इन द नॉर्थ अमेरिकन रीजन इट इज नोन बाय द नेम ऑफ हरिकेन्स. इन द इंडियन ओशन रीजन इट नोन बाय द नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. जापान के एरिया में यहाँ इनको टाइफून्स बोला जाता है और ऑस्ट्रेलियन रीजन में दे आर कॉल्ड बाय द नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, राइट. सो दिस वाज द थिंग. अगर हम इनकी नेमिंग की बात करें, जैसे कि अभी जो नेम दिया है रेमल, ये कैसे नेम किया जाता है? सो डब्ल्यूएमओ का, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक फ्रेमवर्क है जिसमें जो इंडियन ओशन में बेसिकली जो साइक्लोन्स इमर्ज करते हैं उनका नाम दिया जाता है एक कॉपरेशन के मैनर से. जो भी इंडियन ओशन की कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कंट्री लाइक यूएई, ये सभी फेस करती हैं साइक्लोन्स को. सो इन कंट्रीज को कुछ नाम देने पड़ते हैं. दे कैन डेफिनेटली टेक नेम्स फ्रॉम देयर कल्चरल थिंग्स और उसको शेयर करने के बाद रोटेशनली डब्ल्यूएमओ हर एक साइक्लोन को नाम देती है. अब नाम देना जरूरी क्यों हो जाता है? अगर नाम हम दे देते हैं उसको तो कहीं ना कहीं उसको टैकल करना ज़्यादा इजी हो जाता है, बिकॉज न्यूज़ वगैरह में हम उसको नाम लेकर पुकारते हैं एंड यूजिंग विच वी कैन बेटर फॉर्मुलेट the policies or the mitigation efforts can be better taken by using the name of it. This is the logic behind naming the cyclones. I hope आपको ये चीज़ भी समझ में आया होगा. And with that, let's move forward and see the next article, which appeared in the Indian Express newspaper. And in this article, Faizan Mustafa, who is a legal scholar, is arguing about the judgment by the Calcutta High Court, जिसने बेसिकली वेस्ट बंगाल स्टेट ने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भी रिजर्वेशन दिया था, बिकॉज इट वाज कंसीडर्ड बाय अ रिपोर्ट दैट लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटीज दे आर आल्सो बैकवर्ड एंड हेंस दे शुड बी गिवन रिजर्वेशन. बट कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट ने उसको नल एंड वॉइड घोषित किया, राइट. सो फैजल मुस्तफा ये बात करते हैं कि दिस इज अ रॉन्ग थिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी में भी एज वाज मेंशन्ड बाय द साचर कमेटी रिपोर्ट दैट जो मुस्लिम कम्युनिटी की कंडीशंस हैं हमारी कंट्री में, दे आर नॉट वेरी गुड एंड दे आर इवन बैकवर्ड देन दी अदर बैकवर्ड कास्ट एंड दलित्स व्हिच आर देयर. कुछ रीजन्स में मुस्लिम की कंडीशन और ज़्यादा डिटीरियोरेटिंग स्टेट में है. सो द थिंग इज, इस आर्टिकल में कुछ अच्छे कंसेप्ट के बारे में बात किया गया था. दिस वाज द थिंग व्हिच वाज हाईलाइटेड एंड ही पुट फॉरवर्ड हिज आर्गुमेंट. बट द थिंग इज, ही मेंशन्ड अबाउट सर्टेन गुड आर्गुमेंट्स. फॉर एग्जांपल द सब्सटेंटिव इक्वालिटी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं. एंड द अफर्मेटिव एक्शंस व्हिच इज देयर, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है आजकल के समय पे. देयर आर टॉक्स रिलेटेड टू द कास्ट सेंसस एंड दोस थिंग्स. सो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं. So first we will talk about the substantive equality concept. अगर हम इस concept के बारे में बात करें, so ये concept emerge कहाँ से करते हैं? So आपको पता होगा equality is a phenomena which is very new, right? हम देखते हैं कि रेनेसां के बाद से बात होने लगा that there should be equality in a society. कहीं ना कहीं आपको पता होगा in the monarchical setup there was no equality, right? राजा के whims and fancies से decisions लिए जाते थे and there was this differentiation in society which was happening. यूरोप में अगर आप देखेंगे there was a state system which was there. अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है आपको पता होगा there were 3 states which was there, right? जिसमें privileges associated थे. इंडिया में अगर आप देखेंगे तो there was this वर्णा system which was there, जिसमें हम देखते हैं कि the society was divided into ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य and शूद्र. So these were the people. So society was differentiated. But industrial revolution के बाद बहुत सारे countries में equality के लिए demand उठने लगा, right? फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने लगे इकोनॉमिक इक्वालिटी की.
इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में बात किया जाने लगा, दैट एवरी पर्सन शुड हैव दिस राइट टू डू द बिजनेस, डू स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर, राइट। एडम स्मिथ जैसे थिंकर्स आते हैं कि स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इन द मार्केट, मार्केट इज गोइंग टू टेक केयर अबाउट एवरीथिंग। सो इकोनॉमिक स्फेयर के बाद सोशल स्फेयर के बारे में बात होने लगा, जैसे कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में बात किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमें तीन कंसेप्ट इमर्ज करते हैं जो कि हमें देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कंसेप्ट, इक्वालिटी कंसेप्ट वहाँ से इमर्ज करता है। एट द सेम टाइम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, सो दैट वाज फॉर्म्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, हर एक सिटीजन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, दो देयर वर सर्टेन fault lines such as there were no rights to the Afro-American community and then women को भी rights बहुत late मिलते हैं। Even USA में women को rights तो इंडिया के बाद मिलता है, right? That was the thing. So equality की demand 18 to 19th century में उठ रहा था। So उस समय पर जब equality लाया गया by the liberal scholars, उसमें एक फ्लॉ था जो हमें देखने को मिला, राइट। बहुत सारी कम्युनिटीज में, बहुत सारी कंट्रीज में इक्वालिटी हमें देखने को मिला, बट उस इक्वालिटी को बोला गया कि दैट वाज द प्रोसीजरल इक्वालिटी, राइट। और ये प्रोसीजरल इक्वालिटी कहाँ से आता है? दिस प्रोसीजरल इक्वालिटी इमर्ज्ड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। मतलब द रूल ऑफ लॉ विच इमर्ज इन इंग्लैंड, उसने बोला कि सभी जो सिटीजन्स हैं वो लॉ के सामने इक्वल होंगे और लॉ सभी के लिए इक्वली अप्लाई किया जाएगा, राइट। So I talked about procedural equality. मतलब procedure proper होना चाहिए, everyone is going to be equal, right? But substantive equality का concept emerge करता है by when modern liberalism emerged. मॉडर्न लिबरलिज्म हम देखते हैं कि यूरोप में एक वेव की तरह इमर्ज करता है इन द राइटिंग्स ऑफ थिंकर्स सच एज टी.एच. ग्रीन, सच एज लास्की, सच एज कार्ल मार्क्स। उन्होंने बोला दैट ये प्रोसीजर इक्वालिटी से ना, इक्वालिटी तो आपने बना दिया, पर रेस में जब लोग बहुत पीछे से स्टार्ट करें so we cannot achieve the equality of outcomes. That's why substantive equality ने बात किया, there should be equality of outcome. मतलब आप अगर हम इंडियन सोसाइटी की पर्सपेक्टिव समझें, so why there was this thing of affirmative action, why government provided certain benefits to women, to scheduled caste and scheduled tribes, क्यों बनाया गया? Because they were behind in the race. कहीं ना कहीं they faced exploitation earlier, और कहीं ना कहीं मान लीजिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटीज को इंट्रोड्यूस किया, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैव सीन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दिस थिंग्स। ठीक है, ओके। सो गवर्नमेंट ने इन चीजों को इंट्रोड्यूस किया, बट देयर वर डिफरेंसेस इन द कैपेबिलिटीज ऑफ द पर्सन, राइट। जस्ट वन सेकंड। Yes. So there were differences in the capabilities. But our capabilities में difference नहीं, so we cannot achieve the equality of outcomes, right? So that's why substantive equality talked about the equality of outcomes, and यही इसी से emerge करता है the concept such as affirmative action, कि समाज में जो लोग पिछड़े हैं, the people who are educationally और economically backward और socially backward, right? Economical backwardness का concept तो अभी emerge कर रहा है, but social और educational backwardness पे ज़्यादा emphasis था during the time of independence। उन लोगों को के लिए states को कुछ steps लेने पड़ेंगे। State has to engage in a positive discrimination, right? ये एक ऐसा discrimination होने वाला है जो कि society के benefit के लिए help करेगा। Basically, it's going to help in the common good, right? That's why these concept emerge, और आजकल के समय पे हम देखते हैं कि these affirmative actions are important part of our country's polity, right? Though sometimes it is controversial, but still it is important, because हमें पता है कि there are certain sections of society who are backward, who are vulnerable, जिनको इन state के support की जरूरत पड़ती है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि a person living in urban area and a person coming from rural areas, they are going to be difference in terms of capabilities, right? अगर उनको proper education और health नहीं मिला है, right? Because आपको पता है urban areas में there are better quality of education and health, there are better quality of living which they are getting, right? So कहीं ना कहीं there's going to be a difference in capabilities, right? And that's why state has to engage in positive discrimination. This was the thing which was there. Writer ने एक और चीज के बारे में point out किया that the response of Indian judiciary towards the affirmative actions was not very kind from the starting. So ये हमें देखने को मिलता है in the इंदिरा साहनी judgment, जिन्होंने उन्होंने बात किया that basically उस समय पर there was this Mandal Commission report which was released.
मंडी कमीशन रिमोट के बाद से आपको पता है कि ओबीसी के रिजर्वेशन की बात होने लगा, और गवर्नमेंट ने 90s में इन द बिगिनिंग ऑफ द 90s मंडल कमीशन की रिमोट को इम्प्लीमेंट किया, और 50% रिजर्वेशन दिया जाता है ओबीसी को। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको यू नो रोका, और कहीं ना कहीं बोला दैट स्टेट हैज टू क्रिएट अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। जो अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग बेनिफिट उठा चुके हैं रिजर्वेशन का, उनको नहीं मिलना चाहिए बाद में। द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर इमर्ज्ड इन इंद्रासोनी जजमेंट। एट द सेम टाइम एम आर बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट देयर शुड बी 50% लिमिट ऑन द रिजर्वेशन। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डोमिनेंस दिया एफिशिएंसी को, राइट, कि जो ये अफर्मेटिव एक्शंस है, इट शुड नॉट इंटरफेयर इन द एफिशिएंसी ऑफ द वर्किंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। दिस वाज द थिंग which was there. This is a perspective which you can have related to this. So I hope आपको ये चीज समझ में आया होगा, the concept of substantive equality, how concepts such as affirmative action emerged from this concept, and so this was a thing which was there in this article. I hope आपको ये चीज समझ में आया होगा. With that, let's move forward and see the next article. So this is a very interesting news which was there in Indian Express, जिसने बात किया अभी recently NASA ने एक satellite launch किया जिसको बोला गया CubeSat. CubeSat is a satellite which was launched by NASA. और इस सैटेलाइट की एक बहुत खासियत है, इट इज ऑफ द साइज ऑफ अ बॉक्स ऑफ शूज। जितना शू का बॉक्स होता है उतनी ही साइज की है, और सैटेलाइट का साइज तो और भी ज़्यादा छोटा है। इट इज अराउंड द साइज ऑफ रूबिक्स क्यूब। जो रूबिक्स क्यूब हम यूज करते हैं उतनी साइज का है। 10:10:10 इसके डायमेंशंस हैं। सो दिस इज द साइज। और क्यों ये सिग्निफिकेंट होने वाला है? बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प अस टू स्टडी द हीट बजट ऑफ आवर अर्थ। तो हम इस कंसेप्ट को समझेंगे, व्हाट इज एनर्जी बजट ऑफ अर्थ। सो बेसिकली एनर्जी बजट क्या होता है? इन सिंपल वर्ड, एनर्जी बजट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिसीव्ड बाय द अर्थ एंड हाउ मच हीट इज रेडिएटेड बैक, राइट। आपको पता होगा अर्थ में बहुत सारा हीट सन से हमें मिलता है, पर हम उसके बाद यूज करेंगे मत अर्थ जो हीट है उसको वापस भेजते हैं, एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच रिफ्लेक्ट्स द हीट बैक ऑन द स्पेस। फॉर एग्जांपल द ग्लेशियर्स व्हिच आर देयर इन द पोलर रीजन, और समटाइम्स क्लाउड्स, राइट। सो इस चीज को बेटर तरीके से हम स्टडी कर पाएंगे यूजिंग दिस सैटेलाइट। इस प्रोग्राम का नाम था प्रीफायर, राइट। हम अगर देखें, इसका नाम है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। सो दिस वाज द थिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन। सो व्हाट this polar regions do is, जो यहाँ पे हमें ग्लेशियर देखने को मिलता है, because the albedo is higher। albedo के बारे में हमने बात करा है कुछ वीडियोस में। this is the fraction of light which is being reflected back by the polar regions or the regions which are white region का albedo हमें ज्यादा देखने को मिलता है। so polar regions बहुत सारी हीट को वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, and it reflects back in the form of infrared। सो ये सैटेलाइट इंफ्रारेड को ही स्टडी करने वाली है, एंड यूजिंग दिस थिंग वी कैन एनालाइज द एनर्जी बजट ऑफ द अर्थ। उसकी वजह से क्या हो पाएगा? आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इमर्ज कर रहा है अभी के समय पे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितना जो हीट हमें सन से रिसीव करते हैं, कितना हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाते हैं, उसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे, एंड कितना ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाता है। हमारी बेसिकली जो गैसेस ट्रैप करती है, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। सो इस चीज को स्टडी करके वी कैन बेटर फॉर्मुलेट द पॉलिसीज टू टैकल द climate change. So this is the significance of this satellite. This news becomes relevant from your prelims examination perspective. उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो ये प्री फायर सैटेलाइट है किस, और जो ये मिशन है किस चीज के लिए बनाया गया है, what kind of satellite is being used there, and इसका रेलेवेंस क्या होने वाला है, to study the energy budget of the earth, and that can help us to understand the global warming phenomena in a better manner. So with that we have reached to the end of the discussion. I hope आपको सभी आर्टिकल समझ में आए होंगे, and the thing which I have taught you in the beginning, the importance of literature, right? I hope आप इस चीज को अपनी preparation में include करेंगे. You can definitely start reading some good books, and I'm sure आप सभी में कुछ लोग पढ़ते भी होंगे, and that is benefiting you in your preparation. But you can start by reading these books by Anis Chand, which I just mentioned, the book Lost Spring or Unveiling India. And after reading the book for 1 or 2 months, you're going to see a difference in yourself, right? So that was the thing which I have for you.
सो आई होप आपको ये आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा. इफ यू लाइक इट, यू कैन डेफिनेटली like the video, you can subscribe to the channel, and we are going to meet tomorrow with the next video. Thank you so much.